हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों ने मेरे चैनल से न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में क्या है ना, हम पढ़ाई थी एग्जांपल्स ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, राइट, एंड आल्सो डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सो टुडे वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक पेन से। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। Sorry, integral. By using this property, we solve many problems. Okay, so your first property is integration a to b f of x dx. Okay, is equals to, if here lower limit is a and upper limit is b. Okay, if you interchange the lower limit and upper limit, then minus sign is here. Okay, here change lower limit and upper limit. So this is the first property of definite integral. Okay, if we interchange a lower limit and upper limit, then minus sign is here. Okay, so next second is, if upper limit and lower limit both are same. Okay, so your answer is 0, because first of all you find the integration of this f of x, then putting upper limit minus lower limit, so that these two functions are same, so that answer is 0. Okay, so next third is, this is a to b integration f of x dx. Okay, let this a to b, let there is an interval a, any point C in between A and B. Okay, let C be a point in between A and B. So here we write this as A to C f of x dx. Okay, plus C to B f of x dx. Okay, this is the third property of definite integral. Okay, then next go to fourth point. If lower limit is minus a and upper limit is a, okay, f of x dx. So this is written as 2 0 to a f of x dx. Okay, this is for only if the function is even. Okay, this is satisfy only for the function is even. Otherwise, this is 0. That is your if function is odd. Okay, so if this integration is equals to 0 if this is odd, and even if function is even, then answer is this one. Okay, so next is 5. There is a 0 to a. Okay, f of x dx is equals to, we write this as 0 to a f of a minus x dx. Okay, so integration of this one is equals to also integration of this one. These two values are same. Answer of these two values is same. Okay, चलिए next, और 0 to 2a. Here f of x dx equals to, this is also written as 2 0 to a f of x dx. This is only for if function of 2a minus x is equals to f of x. Okay, this is if f of 2a minus x is equals to f of x, then this is satisfied. Otherwise, this is 0. Okay, so this is the sixth property, right? And this is for this one. So that for 7 number, a to b f of x dx is also equals to
same. Lower limit and upper limit is same. Function is also same. Only variable change. Okay, here here there is x and here there is change to y. So answer is same in both the cases because here function same function. Let there is sin x and this is your also sin, but variable is change sin y. सो लास्ट में क्या होता है ना, आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट करना है, तो इसलिए इसका एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, तो आपका जो वेरिएबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू से, ये है ना। इसीलिए इसका वैल्यू जो भी है इसका वैल्यू भी सेम है। यहाँ पे लोअर लिमिट पॉइंट सेम होना चाहिए एंड फंक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए 8, यहाँ पे क्या करना है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. This is written as also a plus b minus x dx. Okay. So these are the properties of your definite integral. Okay. By using this property, we solve any problems. ठीक. Then चलिए. So again I will say, if you interchange the limit point, then you add a sign minus, right? And if both in second year, if both the lower limit and upper limit are same, the answer is 0. Okay. So and in third, if lower limit a and upper limit b, if any point in between this limit value, let this is c, then we write this as integration a to c then plus c to b, means break this integration by this type. Okay. And in fourth, if lower limit is minus a sorry for that, if lower limit is minus a and upper limit is a with function, okay, then this is written as 2 into integration 0 to a f of x dx. Here if function is even, okay, and if function is odd, then this is 0, right? Then in number 5, integration 0 to a f of x dx, this is also written as 0 to a f of a minus x dx. Okay. In 6th number, so this is 2 into integration 0 to a f of x dx. Okay, this is for only if f of a to a minus x equals to f of x, otherwise this is 0. Okay. And in 7th, lower limit a, upper limit b. Okay, in both cases lower limit point is same, function is also same, but variable is different. ठीक. So in number 8, a to b f of x dx, so this is also written as f of a plus b minus x dx. Okay. And चलिए next examples के साथ. So let example, integration this I equals to 0 to pi cos to the power 5x dx. Okay. So ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना, 0 to a f of x dx. Okay, this equals to, we write this as 0 to a f of x dx. Okay, and also this is 0. This is for when if f of 2a minus x equals to f of x, ये है ना, and otherwise it is 0, right? This is the property number, आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, 6. ओके, चलिए चेक करो यहाँ पे, ये 0 to, लेट दिस इज 2 इंटू पाई बाई 2. ओके, ये जो पाई है इसको ब्रेक करके हम लिख दीजिएगा 2 इंटू पाई बाई 2. सो ए के जगह में क्या है यहाँ पे, पाई बाई 2, ठीक है। चलिए चेक करते हैं एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस टू द पावर 5x. ओके, सो हमें चेक करना है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a हियर, पाई माइनस एक्स. ओके, सो कॉस टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस टू द पावर 5, सॉरी हाँ, माइनस कॉस टू द पावर 5x, ये है ना,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये दिस इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके, so this condition is not satisfied here, because here f of pi minus x equals to minus f of x, but here f of 2a minus x equals to f of x is here, but this condition is not satisfied here, so the answer is 0. All are clear? Comparing these two, okay, here 2a की जगह में क्या है, पाई है, ठीक है, और x की जगह x ही है, तो दिस वन इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स. वी फाइंड माइनस एफ ऑफ एक्स, बट आप यहाँ पे जब प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो इसको अप्लाई करना है, बट यहाँ पे तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, आ गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदरवाइज दैट इज 0. सो आंसर इज डायरेक्टली पुट 0. ओके, जब शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ये आएगा तो ये आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं. इंटीग्रेशन -3 to 3 x mod dx. ओके, सो आपका फंक्शन इज mod x, राइट. सो f of minus x equals to this mod x. So your function is what? Even function, ये है ना, बिकॉज इवन फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स मिलेगा, देन ये फंक्शन क्या होता है ना, इवन. ओके, एंड और कैसे होगा, एफ ऑफ माइनस सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स जब मिलेगा तो ये हो जाएगा क्या, ऑड फंक्शन. ओके, सो हियर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, सो दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन. सो हमारा जो प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे -a to a, बिकॉज ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है बट साइन चेंज है, -3 to 3. ओके, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जब इवन होता है, इवन फंक्शन जब इवन होता है, यहाँ पे क्या आ गया, आपका 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अप्लाई करना होगा. देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके, so for even function 2 0 to a, so function is even, so that we write here 2 0 to 3. Okay, x dx, right. So here x को भी लिखना है क्या, so this is 0, sorry for that. मैं इसी साइड से लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² by 2. ओके, देन 0 to 3, देन पुटिंग अपर लिमिट फर्स्ट, and 2 and 2 cancel. Okay, so putting upper limit 3 square minus 0 equals to answer is 9. Okay, so this is the answer. Okay, I hope all are clear. Next question is, the question is I equals to 0 to pi by 2. Okay, then sin x divide sin x plus cos x dx. ओके, सो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हमें क्या लिखना है, वही 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. ओके, ये जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करना है. यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, 0 to pi by 2. ओके, देन साइन a minus x, so here a is pi by 2, so pi by 2 minus x. Okay, then divide sin pi by 2 minus x. Okay, plus cos pi by 2 minus x dx हो गया. ठीक है, सो दोनों जानते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos x. Okay, so here we write pi by 2, this change to cos x.
ओके, सो डिवाइड, ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स dx. Okay, so this is also equal to I. Okay, so now add this I with this I. Okay, means I plus I, that is a 2I equals to 0 to pi by 2. First I is sin x, this one. Okay, sin x divide sin x plus cos x dx with this I, that is a 0 to pi by 2 cos x divide cos x plus sin x dx. Okay, so now adding these two, this is 2y equals to, here limit value is same. Okay, so write pi by 2, and here we write add these two, that is your LCM is same for both the cases. So sin x plus cos x whole divide same sin x plus cos x dx. Okay, both cancel. So answer is 0 to pi by 2 only dx. So integration of dx is x. Okay, so lower limit is 0 and upper limit is pi by 2. So putting upper limit minus lower limit. So answer is pi by 2. Not answer is not pi by 2. Okay, there is 2I equals to pi by 2. Right? So I is equals to 2 is multiply here in this side, 2 is divide here. So pi by 4. Okay, so your answer is pi by I is equals to pi by 4, means I is here. So this one equals to pi by 4. So pi by 4 is your result. Okay, I hope all are clear. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसी तरह और एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 0 to pi. ओके, देन x dx होल डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू पाई. इसको प्रूफ करना है. ठीक है, सो यहाँ पे आई लेट आई इक्वल्स टू दिस वन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो हियर ऑल्सो you apply this property, that is your f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx. Okay, same properties, so apply this property. So here a is pi. Okay, so put x minus pi, sorry, pi minus x, right? Pi minus x whole divide 1 plus sine pi minus x dx. Okay, so now 0 to pi, and this is your pi minus x divide 1 plus sine pi minus x is, or cos x, sine x. Okay, sine x dx. So this is also I. Then now add these two y. So that is your I plus I equals to 2y equals to, first I is this one, second I is this one. Okay, so integration, same integration I write here, x dx divide 1 plus sin x plus 0 to pi. Then second I is your pi minus x divide 1 plus sin x dx. Okay, so here we write integration. I'll write from here. ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखना होगा को इंटीग्रेशन 0 to pi. ओके, हियर 2i. ठीक, so 2i, then x plus pi minus x divide, because LCM is same in both here. So sin x dx. Okay, so now here x and x is cancelled. Then pi is the constant, so taking outside, pi 0 to pi dx divide 1 plus sin x. Okay, so now here you write pi 0 to yes. So let here multiply
1 minus sine x in denominator and both numerator. So here 1 plus sine x, I write here 1 plus sine x into 1 minus sine x. Okay, dx. So here we write pi 0 to pi, then 1 minus sine x. So here we write 1 minus sine square x dx. Okay, so this is converted into cos square x. Okay, so 0 to pi 1 minus sine x divide cos square x dx. Okay, so next we write this such pi, this is your 0 to pi 1 minus, what is here, 1 minus sine x divide cos square x. Okay, 1 minus sine x divide cos square x dx. Okay, so we write this as 0 to pi 1 by cos square x dx, and also 0 to pi sin x by, sorry, this is not plus, this is minus. Okay, so sin x divide cos square x dx. Okay, so now here this is pi, this is written as 1 by cos square x is sec square x. Okay, so minus 0 to pi, this is also this is written as sin x by cos x, cos square x means sin x divide cos x into cos x. So sin x divide cos x is what? Tan x, and 1 by cos x is sec x. So sec x into tan x dx. Okay, so you all are know about what is the integration of cos square x. Cos square x is tan x. Okay, then lower limit and upper limit minus, then sec x into tan x is integration of this one is sec x. Okay, so putting upper limit and lower limit. So now putting upper limit, lower limit, the answer is tan pi minus tan 0. Okay, and here sec pi minus sec 0. So tan pi is, what the value of tan pi means, tan 180 is 0, and also tan 0 is 0. Okay, and sec pi is minus 1. Okay, and sec 0 is 1. Right, so the answer is pi, this is 0 minus 0 minus, this is minus 2. Okay, so minus minus plus, so answer is 2 pi. Okay, so here answer is not 2 pi, there is 2i. Yeah na? So there is 2i. Okay, 2i equals to this one, so this is also 2i. Okay, so 2i equals to 2 pi. So I is equals to 2 and 2 cancel. So answer is pi. Okay, so your final answer is pi. Okay, I hope all are clear. Okay, तो ये आपका टोटल हो गया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल. Okay, and how to use this property in some problems. Okay, so आप लोगों को जिस पॉइंट से भी डाउट है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, देन मैं आप सबका डाउट लेके और एक वीडियो अपलोड करूँगी. ठीक है, तो चलिए आज इतना ही है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए आज इतना ही है. लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू.